That was absolutely adorable, full of energy and a stage-bearing performance. The parents, please give a huge round of applause for them. And dear parents, Radhika is not only known by its prosperity and influence. It is known by its Radhikans, its management, its dedicated teachers, and all its star-achieving students. Dear parents, from science to commerce, from civil lines to defense, from extracurricular to sports, our Radhikans are achieving greatness at different levels. Dear parents, over the span of 15 years, Radhika have produced 3 J qualifiers and 2 NEET qualifiers. And so many contributions Radhika have contributed in the nation's development. So with this mindset, I would like to invite the director of Radhika Group of Institutions to please come out and share about the past and future of Radhika. Please welcome the director of Radhika Group of Institutions with a huge round of applause. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी अभिभावकगण, सभी बच्चे, सभी मीडिया से आए हुए लोग, मेरे प्यारे बच्चों और सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ आज अपना समय निकाल के उपस्थित हैं। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे पास। मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है राधिका पास्ट एंड फ्यूचर। मैं अभी बैठे बैठे यही सोच रहा था, आई वॉज जस्ट कॉन्टेम्पलेटिंग कि 2009 में जब इस विद्यालय की नींव रखी गई थी हमारे विजनरी चेयरमैन सर द्वारा, वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई है और आज टेन्योर देखता हूँ तो बहुत ही लंबा, बहुत ही टफ, बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नी रही है एज फार एज राधिका परिवार, राधिका मैनेजमेंट के लिए या यहाँ के टीचर्स के लिए। बट इन 17 सालों में हम लोगों ने दिन प्रतिदिन जो बच्चों हर साल निकलते हुए उनके अचीवमेंट्स रहे हैं, उनके प्रोग्रेस रही है, वो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये एक छोटा सा बीज जो हमारे चेयरमैन सर ने बोया था, आज एक वट वृक्ष की तरह चारों दिशाओं में, चारों ओर फैल चुका है। मैं इसके लिए बहुत बहुत हमारे चेयरमैन सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका जो विज़न उस समय रहा है, वो उस सोच को आज मैं किसी तरीके से उसको आगे बढ़ा पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। 2-3 बेसिक पॉइंट्स हैं, 2-3 बेसिक क्वेश्चंस हैं मेरे कि हम लोग बच्चों को यहाँ पे क्यों भेजते हैं स्कूल? क्या हम लोग सिर्फ मार्क्स के लिए भेजते हैं या उनको लाइफ में कुछ बनने के लिए, कुछ चीज़ें कि वो आगे एक अच्छा इंसान बन पाए, एक अच्छा नागरिक बन पाए, उसके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं? बहुत सारे स्कूल्स या अभी भी बहुत सारी जगह मैं देखता हूँ कि सिर्फ मार्क्स, सिर्फ सर्टिफिकेट, सिर्फ टॉपर। आई टोटली एग्री कि वो भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। इतना कंपटीशन है, अगर मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, बट उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा नागरिक बनना, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करना, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि वी एज अ राधिका मैनेजमेंट, राधिका परिवार, हम लोग ये इनकलकेट करते हैं बच्चों में। आज का समय सिर्फ पढ़ाई, बुक्स, कॉपीज़ के लिए नहीं है। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें AI इतनी
दूर तक अभी फैल गया है, इतनी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं कि अगर हम लोग उस स्पेस पे काम नहीं करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और उसी पे फोकस करते हुए जो अभी हमारा फ्यूचर है, जो मैं आज से 10 साल बाद राधिका स्कूल को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के टीचर्स को कहाँ देखता हूँ, उसके बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा कि 10 साल बाद मैं अभी, जैसे अभी विधायक जी ने भी यहाँ बताया था कि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स से लेके मर्चेंट नेवी, आईटी सेक्टर, फोरेंसिक्स, हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो आने वाले 10 सालों में जो मेरा विजन है, जो मेरा मिशन है कि मैं हर एक जगह, हर एक डिपार्टमेंट में, हर दिशा में यहाँ के पास आउट बच्चों को यहाँ तैयार करके अपने टीचर्स की मदद से उनको उस सेक्टर में भेज पाऊँ और वो वहाँ जाके राधिका परिवार का, मझगावा का, स्कूल का नाम रोशन करें। सो इस पूरे प्रोसेस में 2 लोग हैं जो मुझे लगता है मुख्य भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे जब बच्चा कैंपस में घुसता है तो वो पूरी स्कूल की जिम्मेदारी होती है और स्कूल में सबसे ज़्यादा जो मेहनत करते हैं, आई गिव ऑल द क्रेडिट टू आवर टीचर्स। वो पूरे सुबह से लेके शाम तक, इवन आफ्टर द स्कूल इज़ ओवर, वो बच्चों के साथ, बच्चों के लिए ही काम करते रहते हैं। और दूसरा, जब बच्चा घर पे रहता है तो आप पेरेंट्स, वो पूरा घर पे उसके खाने से लेके उसकी रहन सहन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। सो मेरे ख्याल से अगर टीचर्स और पेरेंट्स, मैं तो एक माध्यम हूँ, ये राधिका मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ एक यहाँ पे सुविधा दे रहा है, बट द मेन 2 पीपल जो ये बच्चों की भविष्य को तैयार कर रहे हैं वो टीचर्स और पेरेंट्स हैं। सो अगर मेरे ख्याल से हम दोनों लोग, आप और टीचर्स अगर मिल के काम करें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा, कोई भी यहाँ का स्टूडेंट किसी भी चीज़ में पीछे रहेगा। तो इसी मोटिव से, इसी लक्ष्य से मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और लास्टली मैं बस एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पे 1500 बच्चे हैं। तो पूरे साल की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं उस पूरे मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट से लेके कंस्ट्रक्शन से लेके टीचर्स, करिकुलम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक प्रिंसिपल के लिए और एक मैनेजमेंट के लिए। सो 1500 बच्चों के बारे में वो मैनेज करते करते, वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स, वी आर नॉट भगवान, हमसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। सो इस पूरे प्रोसेस में कहीं कुछ कमियां रही हो तो जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर ने बताया था, आप लोग प्लीज़, वी आर मोस्ट वेलकम कि आप लोग आके जो भी सुझाव है वो क्लास में, चाहे प्रिंसिपल सर को, चाहे मैं अभी रहूँगा, आप लोग प्लीज़ अपने सुझाव दें और मैं ये आश्वासन देता हूँ कि उस पर वर्क करके हम लोग और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। Thank you, respected directors, for your valuable guidelines. Now, this is the time to award those students who have been phenomenal throughout the session, who have worked a lot on their grooming. This is the time for the prize distribution of most personable child. So I would like to call Anshika and Bhagyashree to please announce the nominees for most personable child award. For the distribution of the prize, I would like to call the director of this institution to please come on and appreciate the students. And now we move ahead to a category that celebrates not just talent but the beauty of one's personality. अब समय है उन विद्यार्थियों को सम्मानित करने का जिन्होंने अपने व्यवहार और व्यक्तित्व से सबका दिल जीता है। We now present the most personable child award. A good personality is not just about appearance but about kindness, confidence and the way one connects with others.
These students impressed everyone with their positive attitude, polite behavior, and charming presence. अच्छा व्यक्तित्व सिर्फ रूप से नहीं बल्कि व्यवहार से और सोच से पहचाना जाता है. They carry themselves with grace and leave a lasting impression wherever they go. They truly reflect confidence, respect, and positivity in every way. Beginning with our first class group, nursery to UKG. From nursery we have Shambhavi. From LKGA we have Arpit Chand Kausik, and from LKGB we have Tushar Kumar. UKGA Arohi Singh. UKGB Divyanshu Singh. And next from the next category award. From class group 1st to 5th, we have Vedansh Singh from 1st A and Rakshita Singh from 1st B. From 2nd A we have Asad Ali Adil, and from 2nd B we have Aditya Pandey. 3rd A Ishan Pandey, 3rd B Shivam Yadav. जिनका नाम बोला जा रहा है उनके गार्जियन से निवेदन है कि जितना जल्द से जल्द हो स्टेज पे बच्चों के साथ आए. From 4th A we have Aryan Singh, and from 4th B we have Rajveer. 5th A Akshita Kausik, 5th B Rubal Jaiswal. Now we invite students from the next class category, which is 6 to 8. From 6th A we have Bhumi Nishad, 6th B Arohi. From 7th A we have Aradhya Gupta, and from 7th B we have Anshika Madheshya. 8th A Khushi Singh, 8th B Ananya Sharma. And now from the senior most class group, 9th and 11th. From 9th A we have Saksham Nigam, 9th B Siddhi, 9th C Nancy Rana. From 11th A we have Ananya Pandey. 11th B Anyuta Kaushik. 11th C Farheen Fatima. 11th E Khushi Kumari. Dear parents, there is a confusion regarding class 7th A. Aradhya Gupta, daughter of Krishna Gupta, is the most personable child. So please, the Aradhya Gupta, who is the daughter of Krishna Gupta, will come on the stage. I request all the students to please come on the stage and receive your regarding awards along with your parents. Dear parents, a talent cannot only be judged with his education. A talent requires a better grooming as well. These students have maintained better grooming in all throughout the session. Please give a huge round of applause for them for doing a great job in throughout the session. Being the most personable child of the classes, the students have proved that how much grooming is needed in someone's life. These students have impressed everyone with their positive attitude, polite behavior and a charming presence. Dear parents, this is the occasion where every parent will feel proud because of the performance of the student of the wards. अच्छा व्यक्ति सिर्फ रूप से नहीं, व्यवहार से और सोच से पहचाना जाता है.
Dear parents, Radhika not only focus on the students who are great in studies, it also focus on those students who are great in several fields. And this is the example. Congratulations to all the winners for their wonderful personality and confidence. They truly reflect confidence, respect, and positivity in every way. And now we move ahead to a category that represents responsibility, leadership, and trust. अब समय है उन विद्यार्थियों को सम्मानित करने का जो अपनी जिम्मेदारी और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। We now present the Class Prefect Award. A class prefect is not just a position, but a responsibility that requires discipline, confidence, and leadership. Dear parents, these students have been the right hand for the teachers. They worked hard and managed the classes. They have encouraged their classmates to maintain the discipline and throughout the session. Beginning from the first class group, nursery to UKG, from nursery we have Prisha Singh and Arav. From LKGA we have Agrima Yadav and Ankush. LKGB, Trisha Chaudhary and Ayush Gupta. From UKGA we have Anbisha Singh and Arhan Sahi. And UKGB we have Iliba Iqbal Sahi and Aman. From first day we have Devanshi Kaushik and Ayan Kaushik. And from first B we have Ruhi Singh and Arnav Gupta. From second A we have Adya Tiwari and Piyush Yadav. And from second B we have Shivangi Yadav and Deep Yadav. Third A Ayat Sahi, Abhi Jaiswal. Third B Shivanya Modanwal and Rishabh. From fourth A we have Aditi Prajapati and Ayushman Chand. Fourth B Kriti and Yuvraj Singh. From fifth day we have Ananya Sahi and Arnav Pratap Chand. Fifth B Ayush Yadav and Riddhi Mishra. Sixth A Ananya Gautam and Ayush Kumar Gupta. Sixth B Ananya Shahi and Ayush Pandey. Seventh A Nicha Yadav and Shreyansh Gupta. Seventh B Anushka Yadav and Himanshu Yadav. Eighth A Mahima Shahi and Gufran Ansari. Eighth B Suhani Singh, Ankur Chand. From ninth A Bhagyashree and Vinay Yadav. 9B Pihu Sahi, Amit Sahani. 9C Antima Yadav and Ansh Singh. Dear parents, these
the students have showed off that how a true leadership looks like. They have lead the classes. 11A Sushanta and Harsh Gupta. 11B Vaishnavi God and Siddharth Verma. 11C Shivangi Yadav and Shivam Pandey. 11E Garima Prajapati and Prateek Singh. Dear parents, carry on your claps. Your claps are like a drop of motivation. The shining stars are now here like the stage. These students have shown the ability to guide, maintain discipline, and set a positive example in their class. They truly represent the spirit of leadership in its finest form. Dear parents, every platform requires a leader, and these students have continued that leadership throughout the session, and I hope that these students will continue to have that intent in the coming sessions as well. Congratulations.
winners for their leadership and sense of responsibility. You truly set an example for others to follow. सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई. Dear uncles, after that, you have to announce the nominees of most versatile child and not of the most disciplined child. And now we move ahead to one of the most prestigious categories of the day. अब समय है उन बच्चों को सम्मानित करने का जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. We now present the Most Versatile Child Award. This award celebrates students who are not limited to just one field, but shine in multiple areas. Be it academic, co-curricular activities, discipline, or overall personality, these children have excelled in every aspect. ये बच्चे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हैं. They truly represent balance, talent, and all-round excellence. They are an inspiration for everyone to explore their full potential. I hope that these students who are right now a leader of a class, one day they will lead the country. One day they will lead several fields of the country. Beginning from our first class group, nursery to UKG, we have Ajinkya Pathak from nursery. From LKGA, we have Vaishnavi Nigam, and LKGB, we have We would like to invite Pari Sahi, Pari Gupta and Ambiya Sahi from second B for the category of Most Versatile Child. from third A, we have Ayan Singh, and third B, Anubhavi Shahi. Fourth A, Ananya Pandey. Fourth B, Aryan Kumar. Fifth A, Devanshi Oza. Fifth B, Aram Vishwakarma. All the awardees of the most versatile child are requested to please come on the stage to receive the awards. Sixth A, Rajveer Singh. Sixth B, Anushka Singh. 7A, Samriddhi Gupta. 7B, Samaryada. Eighth A, Rachita Rathore. Eighth B, Sameer Sahani. Ninth A, Ayushi Sonkar. 9B, Ananya. 9C, Anushka Maurya. 11A, Sahil Gupta. 11B, Ujjwal Kumar Mishra. 11C, Riddhi Rawat. 11E, Kritika Shahi. Dear parents, these students have maintained the versatility. They feature the character which every student requires. They have shown the courage and dedication in every field of the activity. Throughout the session, in every activity, in every competition, they have led them. Dear parents,
these states is full of opportunities, sessions as well. Aryan Singh from class 3rd A is the most versatile child. Once again, Aryan Singh from class 3rd A is the most versatile child. Congratulations to all the winners for their outstanding all-rounder performance. You truly represent excellence in every sense. सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। And now we move ahead to a category that reflects one of the most important values in life, discipline. अब समय है उन बच्चों को सम्मानित करने का जिन्होंने अपने अनुशासन से सबका दिल जीता है। We now present the Most Disciplined Child Award. Discipline is the foundation of success and the key of achieving one's goals. It shapes character, builds responsibility, and helps individuals stay focused and committed. अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी होती है. These children have consistency shown, sincerity, good conduct, and respect towards their teacher and others. Dear parents, as the darkness is close to us, but here the students are shining like a star. They have enlightened the whole assembly with their courage, with their mind, with their talent. Now from LKGA we have Avirat Pratap Chand, and from LKGB we have Akarsh Yadav. From UKGA we have Shivan Singh. UKGA we have Ayansh Pandey, and UKGB we have Shivan Yadav. We would like to invite Ayansh Pandey from UKGA and Shivansh Yadav from UKGB for the category of Most Disciplined Child. And now from first A we have Abhinandan Singh, first B Ananya Yadav. From second B we have Second A we have Aditya Maurya, and second B we have Anuj Pratap Singh and Yashveer Yadav. Dear parents, And now from third A we have Avinash Singh, and from third B we have Amit Yadav. From fourth A we have Yatharth Tripathi, and fourth B we have Tahreen Fatima. Fifth A Mariam Khatun. From fifth A we have Anshika Giri, and from fifth B we have Mariam Khatun. From sixth A we have Virat Pratap Singh, and from sixth B we have Yash Kannauji. Seventh C Aradha Srivastav. 11E Ananya Singh. You are requested to please come on the stage and receive your awards. Dear parents, these students have shown that how much discipline is needed in someone's life. These students have maintained the discipline, the proper behavior which the students must have. Dear parents, discipline is also as much important as education. Without discipline, education is nothing. First of all, you are not judged by your education, you are judged by your discipline. You have to be polite, you have to behave great.
From class 3rd A, it is Avinash Singh who have received the award for most disciplined child. Dear parents, it is clear that discipline Dear parents, a lot of congratulations to all of you. Thank you so much, Director Sir, for your valuable bravery and greatness. Dear parents, now I would like to invite the talented students who have conducted this Chawar skit. Please welcome the performance of Chawar skit with a huge round of applause. Dear parents, every field, whether it is education or extracurricular, everything needs or demands dedication. These students' dedication have led them to perform here on this biggest stage. Dear parents, Radhika have continued to raise the students who represent the country at the biggest of stages. दक्कन से खबर आई है जहां में दक्कन का सुहा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो गया। प्राण तरस गए पर आज भी कोई अच्छी खबर नसीब नहीं हुई। सिवा जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहाँ? जश्न मनाओ, फकीरों को अमीर बनाओ, मराठा साम्राज्य के इंतकाल की खुशियां मनाओ। जहां आलमगीर की इजाजत के बिना हवा भी अपना रुख नहीं बदलती थी, वहां की किस्मत बदल गई है। दक्कन से फिर एक तूफान उठ के आया है आलमगीर, जिसका नाम है संभाजी भोसले। Let
लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। वासुदेवाला रो वासुदेवाला, वासुदेवाला रो वासुदेवाला। बोलो बहिर जी। गुजरा महाराज। औरंग के दर्शन हुए? सिर्फ औरंग के दर्शन नहीं राजे, 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति। इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने नहीं मिली। बहिर जी, औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहना। यदि वो आधे रास्ते भटक भी जाए, उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ देना। राजे, राजे। गोवा के परशुराम जी, कुडाल के विनायक जी एक एक करके औरंग के जाल में फंस रहे और स्वराज्य का साथ छोड़ रहे हैं। वैसे ईसा जी, दक्षिण के सभी प्रांत प्रमुख को आदेश दे दीजिए कि हमसे आकर मिले संगमेश्वर में। एक बात हमारी समझ के बाहर है। ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं, बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। ये हिंदवी स्वराज्य भावे एक श्रेणी इच्छा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहाँ संगमेश्वर में होगा। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी, पार्वती पते। क्या हुआ बाबा? धोखा हुआ है संता। ये तो मुगलों की सेना है। क्या? संगमेश्वर की तरफ महाराज की ओर बढ़ रही है। उनसे पहले हमें महाराज के पास पहुंचना होगा संता। हवा की गति से दौड़ना होगा। किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती पे छुरा भोंका? करो जी और करो जी। 20 माओवादियों की टुकड़ी तैयार है आपको सुरक्षित रायगढ़ ले जाने के लिए। कृपा करके आप यहाँ से तुरंत निकल जाए। चंदूगा मारते कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है? हमारा जंगल में भागने का मन कर रहा है। महाराज मेरे की हिंद का अमर उजाला, पान पे कर दिया छावर, लहू में जिसके ज्वाला था। तूफान चीर मेरे छत्रपति महाराज संभाजी, बोले अतीत शत्रु अधीर जब चलते थे संभाजी। हर क्षण पर ज्वाला अंदर हवा से घोड़े उड़ते थे। मृत्यु का टीका ढमरण में जब मर्द मराठा लड़ते थे। चिंगार सनातन की ऊंची और ध्वज केसरी लहरें थे। ढोल ढोल थे घोड़ गाँव से रोज चढ़े थे। महाराज मेरे चंदूगा मध्य रायगढ़ की सजी धजी महफिल न सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी घोड़े तो तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। हमसे हाथ मिलाओ, मुगलों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते औरंग, और शेर के बच्चे को
कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें निकले। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं मोरन। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत बना दो कि हर घर एक नया सिवाय नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज, तुम नमक नहीं चंदन हो कभी। तुम तिलक हमारे माथे का। आज एक वीर गिरा नहीं, आज एक इतिहास खड़ा हो गया है। यह बलिदान किसी एक व्यक्ति का नहीं, यह बलिदान हर उस व्यक्ति का है जो अपने स्वाभिमान को जीना जानता है। छत्रपति संभाजी महाराज ने हमें ये सिखाया है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने हमें ये सिखाया है कि गिरना नहीं, टूटना नहीं, अपने दम पे खड़ी होकर दिखाना। जय भवानी, जय शिवाजी। Dear parents, now I would like to call Ram Nagina ji, who is a retired engineer, and we are fortunate to have him among us. Dear parents, now we are at the stage where the prize distribution is regarding the most active child. Now we are going to announce the awardees of the most active child. So please give a huge round of applause for the students who are going to achieve the award. Beginning with nursery, we have Agrima for the category of most active child. 9A अभिनव शाही, 9B परिधि सिंह, 9C उमंग सिंह, 11th A Akshat Dubey, 11B Aditya Rawat, 11C Arushi Pandey, and 11th E Muskan Sahi. All the awardees are requested to please come on the stage along with the parents as soon as possible. Dear parents, these are the students who have shown that how a youth must be. They have actively participated in almost every cultural or sports program held in the school.
their students and their parents. These students have been phenomenal in every field of activities conducted by the school. सभी अभिभावकगण से निवेदन है कुछ समय और धैर्य बनाए रखें। आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। बच्चों के पूरे साल की मेहनत होती है। आप लोग जिस तरीके से यहाँ पे बैठ करके बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो बच्चों के लिए बहुत ही मनोबल का काम करेगा। आप जिस तरीके से उत्साहवर्धन कर रहे हैं, कुछ समय और आप लोग धैर्य बनाए रखें। Dear anchors, after that you have to announce the nominees for the best and Mansi Singh, 11th B. Om Mishra, 11th C. Anshika Pandey, 11th E. Prateek Singh. Dear parents, English is a language which is must in everyone's life. This helps one to communicate at the several parts of the world. These students have maintained their English and speaking skills throughout the session. So please give a huge round of applause for them. These students have shown that how much English language is must in someone's life. These children have made sincere efforts to improve their English speaking skills. Absolutely, these awards will raise the students to maintain their English fluency, to raise the exceptions for them in speaking the English. Learning a language is not just about words, but about the courage to express oneself.
depends in the environment of Hindi. These students have made them that capable to speak a fluent English. And for that hard work, these students are hereby rewarded. It depends in the generation of development in Now, this is the time to invite the principal of Radhika Degree College. So please give a huge round of applause for him. I request him to please come on the stage and share his valuable guidelines. मैं सभी गार्जियंस के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग धीरज बनाए हुए हैं और मैं कोई भाषण मैं पुरस्कार वितरण के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं आप सभी का आभारी हूँ। देर हो रही है फिर भी आप बैठे हुए हैं, इसलिए कोई समय आपका जाया न करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पुरस्कार वितरण को कंटिन्यू किया जाए। Depends, now this is the time to announce the name of the rank holders. The students who have made themselves that capable to be in the ranks. Depends, we will continue the prize distribution from rank third. I request Bhagyashree and Anshika to please announce the nominees who are the rank holders. We now begin with the rank third award. From nursery we have Divyanshi, daughter of Mr. Vipin Sonkar. Depends, please give a huge round of applause for Divyanshi, who have scored 97.2%. हेलो, अभिभावकों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन बच्चों का नाम बोला जा रहा है उनके साथ तुरंत स्टेज पे आए, समय ज़्यादा न लें। Now LKGA, Rajvardhan Singh, son of Mr. Anubhav Singh, have scored 94.20%. From LKGB we have Elena, daughter of Mr. Pradeep Chand with the percentage of 97.30. From class UKG, it is Deep Shah Singh, son of Mr. Chanchal Kumar Singh, who again have scored 97.60%. From UKGB, Kanishka Kaushik, daughter of Mr. Sonu Kumar and having 98.20%. Now it is the time for class first A. The third rank holder is Rudra Pratap Singh, son of Mr. Yogesh Kumar Singh, who have scored 89.20%. Please give a huge round of applause for the students. From first P we have Nayanshi Rai, daughter of Mr. Manish Rai with a percentage of 81.70. Now from class second A, it is Adya Tiwari, the daughter of Mr. Surya Prakash Tiwari with a percentage of 94.47.
From class 2nd B, it is Deep Yadav, son of Mr. Vijay Bahadur Yadav, with an amazing percent of 92.33. From 3rd A, we have Pankuri Rai, daughter of Mr. Chandra Kishore Rai, with a percentage of 90.67. From 3rd B, we have Kavyanshali, daughter of Mr. Krantikal Bagi, with a percentage of 78.53. From 4th A, we have Ragini, daughter of Mr. Munnar Yadav, with a percentage of 90.80. And from 4th B, we have Veer Singh, son of Mr. Sangram Singh, with a percentage of 85.87. And from 5th A, we have Aryan Yadav, son of Mr. Dipur Yadav, with a percentage of 93.47. From 5th B, we have Ananya Maurya, daughter of Mr. Rishikesh Maurya, with a percentage of 90.82. From 6th A, we have Rudransh Mishra, son of Saurabh Maurya, with a percentage of 85.84%. From 6th B, we have Aradha Gupta, daughter of Mr. Sriram Gupta, with a percentage of 82.84. From 7th A, we have Anvi Rathore, daughter of Mr. Roop Kumar Rathore, with a percentage of 93.67. From 8th B, we have Himanshu Yadav. From 7th B, we have Himanshu Yadav, son of Mr. Vishamba Yadav, with a percentage of 86.74. From 8th A, we have Mahima Sahi, daughter of Mr. Anil Kumar Sahi, with a percentage of 89.16. From 8th B, we have Pihu Tiwari, daughter of Mr. Akhilesh Tiwari, with a percentage of 86.24. From 9th A, we have Bhagyashree, daughter of Mr. Ranjit Yadav, with a percentage of 87.83. From 9th B, we have Bharat Bhushan Trivedi, son of Mr. Suraj Kumar Trivedi, with a percentage of 84.42. From 9th C, we have Nancy Rana, daughter of Mr. Rajesh Kumar, with a percentage of 83.42. From 11th A, we have Tanish Singh, son of Mr. Rajesh Kumar Singh, with a percentage of 91.25. From 11th B, we have Vaishnavi Gaur, daughter of Mr. Sunil Kumar Gaur, with a percentage of 86.20. From 9th C, we have Anshika Pandey, daughter of Mr. Akhilesh Pandey, with a percentage of 84.32. From 11th E, we have Samiksha Rai, daughter of Mr. Rudra Pratap Singh, with a percentage of 72.08. Dear parents, from class 11th E, it is Samiksha Singh. All the awardees are requested to please come on the stage. Dear parents, these students have not achieved a rank. They have made their parents to feel proud. Let's give a big round of applause for all the students.
We now present the rank second award. From nursery, we have Avni Vishwas, daughter of Mr. Uttam Prasad with a percentage of 97.40. From LKGA, we have Mehak Chaudhary, daughter of Mr. Manoj Chaudhary with a percentage of 95.11. From LKGB, we have Trisha Chaudhary, daughter of Mr. Vivekanand with a percentage of 97.50. From UKGA, we have Arya Pandey, daughter of Mr. Krishna Pandey with a percentage of 98.80. From UKGB, we have Pihu Gupta, daughter of Mr. Sailendra Gupta with a percentage of 98.90. From first day, we have Ayan Ansari, son of Mr. Samullah Ansari with a percentage of 91.80. From UKGA, we have Arya Pandey, daughter of Mr. Krishna Pandey with a percentage of 98.80. आदरणीय सुभाकर तिवारी जी को जो लास्ट सहारा से आए हुए हैं, उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वह आकर के यहाँ बच्चों का उत्साहवर्धन करें। From first P, we have Srinika Chand, daughter of Mr. Akash Chand. From second day, we have Shivansh Yadav, son of Mr. Grijesh Yadav. From second B, we have Nivedita Rai, daughter of Mr. Manish Rai. From third A, we have Ayat Sahi, daughter of Mr. Razi Hassan Sahi. अब मैं आदरणीय राजेश सिंह जी को बुलाना चाहूँगा कि वह यहाँ करके बच्चों का उत्साहवर्धन करें। From third B, we have Ritika, daughter of Mr. Achi Lal. From fourth A, we have Ayushman Chand, son of Mr. Govind Chand. From fourth B, we have Shubh Sahi, son of Mr. Praveen Kumar Sahi. From fifth A, we have Yajat Singh, son of Mr. Amit Kumar Singh. From fifth B, we have Riddhi Mishra, daughter of Mr. Sandeep Mishra. From sixth A, we have Ananya Gautam, daughter of Mr. Santosh Kumar. From 6th B, we have Ananya Sahi, daughter of Mr. Sanjay Sahi. From class 4th B, it is not Shubh Sahi, it is Shubhi Sahi, daughter of Mr. Praveen Kumar Sahi. From 7th A, we have Shreyash Gupta, son of Mr. Kamlesh Gupta. From 7th B, we have Samar Yadav, son of Mr. Ram Pratap Yadav. From 8th A, we have Gufran Ansari, son of Kalimullah Ansari. From 8th B, we have Ansh Gupta, son of Jeet Bandhan Gupta. From 9th A, we have Kavya Rai, daughter of Mr. Chandrakishore Rai. From 9th B, we have Aradhya, daughter of Mr. Vijay Shankar. From 9th C, we have Shivan Singh, son of Mr. Shiv Kumar. From 11th A, we have Pratima Yadav, daughter of Mr. Ram Awadh. From 11th B, we have Tripti Gupta, daughter of Mr. Harilal Gupta. From 11th C, we have Riddhi Rawat, daughter of Mr. Pramod Rawat. From 11th E, we have Garima Prajapati, daughter of Mr. Sailendra Prajapati. These all students are rank holders. So please give a huge round of applause for the hard work throughout the session.
I hope that these students will continue the same momentum in the upcoming sessions. They will continue to score high and one day they will achieve a greatness. Please give a big round of applause for the children as they deserved it. Dear parents, have some more patience as we are close to the conclusion of this ceremony. प्रिय अभिभावक, आप सभी अपना धैर्य बनाए रखें। अब हम कार्यक्रम के अंतिम तथ्य पर पहुंच चुके हैं। We now present the Rank First Award. Before announcing the rank holders of first, I would like to call a respected director sir and principal sir. सारे गार्जियन का बहुत बहुत धन्यवाद उनके धैर्य के लिए। अब हम अपने समारोह के अंतिम मुहर्रे पे हैं। We now present the Rank First Award. From nursery we have Vaishnavi Prajapati. Now I would like to invite the director and principal of Radhika Group of Institution to please come on the stage and distribute the prize to the first rank holders of classes. From nursery we have Vaishnavi Prajapati, daughter of Mr. Ganesh Prajapati. From LKG A we have Aditi Pandey, daughter of Mr. Sujit Pandey. From LKG B we have Arohi Nishad, daughter of Mr. Kamlesh Kumar. From UKG A we have Deepshika, daughter of Mr. Ajay Kumar. From UKGP, we have Arya Sahi, daughter of Mr. Ashraf Sahi. From first day, we have Farhan Ansari, son of Kalimullah Ansari. From first P, we have Arnab Gupta, son of Shri Ram Gupta. From second day, we have Vivan Vidyarthi, son of Mr. Vinod Kumar. From second D, we have Shivangi Yadav, daughter of Munna Yadav. From third day we have Abhi Jaiswal, son of Mr. Ajay Kumar Jaiswal. From third B we have Gardhan, son of Mr. Vijay Shankar. From fourth A we have Ananya Pandey, daughter of Mr. Navneet Pandey. From fourth B we have Aradhya Sahani, daughter of Mr. Ravindra Sahani. From fifth A we have Aviral Sahi, son of Mr. Shravan Maurya. From 5th B we have Pratibha Maurya, daughter of Mr. Shravan Maurya. From 6th A we have Anshika Sharma, daughter of Mr. Ashok Kumar. From
6th B we have Krishnanand, son of Mr. Sudarshan Kannaujiya. From 7th A we have Nija Yadav, daughter of Mr. Uday Pratap Yadav. From 7th B we have Ayush Verma, son of Mr. Vinod Verma. From 8th A we have Akansha Verma, daughter of Mr. Brijesh Kumar Verma. From 8th B we have Yash Mishra, son of Mr. Upendra Mishra. From 9th A we have Komal Gupta, daughter of Mr. Sandeep Nigam. From 9th B we have Ananya, daughter of Mr. Madhusudhan. From 9th C we have Harshit Tiwari, son of Mr. Pradeep Kumar Tiwari. From 9th A we have Mansi Singh, daughter of Mr. Prashant Singh. From class 11th B, we have Rajshri, a daughter of Mr. Elanjit Yadav with an impressive percentage of 88.70. From class 11th C, we have Shivani Yadav, a daughter of Mr. Radheshyam Yadav with an impressive percentage of 88.80. Now, from the humanities section, we have Pradeep Singh, a son of Mrs. Mamta Singh and Mr. Arun Singh, with an impressive record of 94.38%. All the awardees are requested to please come on the stage along with their parents. Dear parents, it is the stage where the toppers of every class are going to be rewarded. Someone are the board appearing students in the coming section. Please give your congratulations and blessings so that the students can continue the same momentum in the upcoming session. Dear parents, we are glad to say that every student of our school who have achieved first rank almost have scored above 90% marks. सभी अभिभावक से निवेदन है कि 2 मिनट और समय दे दें ताकि सभी क्लास टीचर्स अपने अपने क्लास में पहुंच पाए। अभी वो पहुंचे नहीं है। कृपया आपसे निवेदन है कि 2 मिनट और आपका बहुमूल्य समय चाहिए। कृपया आप सभी अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। जब तक के अनाउंसमेंट ना हो कृपया ना जाए, क्योंकि क्लास टीचर अभी भी यही स्टेज के पास ही हैं। सभी क्लास टीचर यहीं पे हैं सर। प्लीज आप सभी से निवेदन है 2 मिनट का और समय दें, सिर्फ 2 मिनट। सभी क्लास टीचर यहीं पे हैं। आप भी से रिक्वेस्ट है 2 मिनट और धैर्य रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया 2 मिनट और अपना दें। सभी अभिभावक कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं। बस प्रोग्राम का एंडिंग चल रहा है। 2 मिनट और आपका बहुमूल्य समय चाहिए। अभी सभी क्लास टीचर यहीं पे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा और धैर्य रखें। टीचर्स प्लीज टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स। उन्हें बैठाइए। 2 मिनट और। ऑल टीचर्स प्लीज। इस प्राइज के बाद ग्रुप टॉपर अवार्ड दिया जाना है जो अपने अपने ग्रुप में टॉप किए हैं। 3 ग्रुप कैटेगरी है।
4 ग्रुप कैटेगरी है, प्री प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप। प्लीज 2 मिनट का समय और आप हमें दें, कृपया बैठ जाएं। मैं उन बच्चों को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। प्राइमरी ग्रुप यानी कि नर्सरी टू यूकेजी, दीपशिखा डाटा अजय कुमार तुरंत स्टेज पे आ जाए। प्राइमरी ग्रुप यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ से शिवांगी यादव, डाटा मुन्ना यादव 97.53%, दीपशिखा 99.90%। जूनियर ग्रुप 6 to 8 नीचा यादव, डाटा राम उदय प्रताप यादव 96.17%। एंड सीनियर ग्रुप कोमल गुप्ता, daughter of Mr. Sandeep Nigam 99.93%. So please clap for that. So requested to group toppers, please come to near the stage. कोमल गुप्ता का पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा परसेंटेज है। Dear parents, it is a moment of a dream. Komal Gupta, who has scored almost 100% marks, he falls short of 0.7% marks before scoring 100. She has scored 99.93% in her class 9. I request her to please come on the stage along with her parents and receive the trophy of school topper. Not every student have that quality to be in several fields and then score marks like this. Komal have maintained the purity, the discipline, the dedication towards her studies, and this is all which have led her to score of 99.93. Also, a great congratulations to the students, to the student of pre-primary group, where Deepsika have topped the group with a percent of 99.90. In primary group, we have Shivangi Yadav from class 2nd B, daughter of Munna Yadav, with an impressive percent of 97.53. In pre-primary group, it is Deepshikha, and in primary group, it is Shivangi Yadav, daughter of Munna Yadav, with an impressive percent of 97.53. Dear parents, in junior section, this is Neecha Yadav, a daughter of Mr. Uday Pratap Yadav. Shivangi Yadav, class 2nd B, has topped the primary group of the school. Many congratulations to all these group toppers and also to the be the best among many students. all of you are requested to please stand at your positions. We are hereby with Sara Jahan Se Acha. Standees, attention. Standees, attention. Get ready for Sara Jahan Se Acha.
This is how the event is over. Thank you all of you for your contribution. All the parents have a major contribution in this ceremony as they have patience till the last of the ceremony. Now all the class teachers are requested to please move to their respective classes. Thank you.